Hello friends, welcome back to my channel. My name is Yuvraj Shukla. After a long break, today we will be starting with the chapter Prime Minister and the Councils of Ministers from Civics. I would like to thank Smith Gupta for his contribution in this video. So let's begin. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये छोटा सा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूं. तो अगर आप लोग को ये वीडियो बड़ा लगे, so you can take a small break in between. Okay, so let's start with the chapter. The Constitution of India provides for a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. The President acts in accordance with their advice in the exercise of his functions. Okay, a Prime Minister is the head of the cabinet and the leader of the ministers in the executive branch of government, often in a parliamentary or semi-presidential system. President, Prime Minister कौन है? Prime Minister है Councils of Ministers and कैबिनेट मिनिस्टर्स में हेड होता है जो उसको वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ये हम लोग अपॉइंटमेंट के अंदर पढ़ेंगे, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बस एक याद रखने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है. एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें जिसके अकॉर्डिंग्स में प्रेसिडेंट अपना आगे का फंक्शंस करेगा. ओके, अभी हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं. Article 75 of the Constitution states that the Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister. Okay, so according to the Article 75 of the Constitution, Prime Minister को appoint करता है President and other ministers जो councils of ministers हैं उनको भी President appoint करता है, but Prime Minister के advice पे. President के पास कोई choice नहीं है but प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस को कंसिडरेशन में लेने. ठीक है, ये मैटर के लिए बस इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के लिए. ओके, अभी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं कौन? नाउ लेट्स सी हु आर द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. So before 1979, the Constitution did not refer to the word cabinet. It referred only to the councils of ministers. The 44th Amendment Act provides that the President shall not issue a proclamation of national emergency unless the decision of Union Cabinet has been communicated to him in writing. Okay, so after this, the distinction between the cabinet and the councils of ministers has become evident. मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में तीन टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं. पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं एंड फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं. ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ दोज मिनिस्टर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर अ मिनिस्ट्री एंड आर यूजुअली लेड बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. ओके, नेक्स्ट, हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स. सो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स फर्स्ट, सेकंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड थर्ड एंड लास्ट डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं. ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में. So the job of a senior minister who is a member of the cabinet minister, the job of a head of a government department, cabinet, persons appointed by a head of state to head executive departments of a government and act as official advisors. Okay, so they are the most important members of the councils of ministers. They hold important portfolios like home minister, defense minister, finance minister, external affairs minister, railway ministers, and etc. The cabinet minister is in charge of a ministry and sometimes of more than one ministry. Okay. Now, difference between the cabinet ministers and the councils of ministers is the cabinet is the part of the council which consists of most experienced and important members that discusses and decide government policies, whereas council of minister is the executive body of the government that advises the president on various matters and is formed to assist the prime minister in running government. Okay, so cabinet part है council of ministers का and council of minister the executive body है government. ठीक है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है बहुत सारे मैटर्स पे और जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है. अभी कंसिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है? सीनियर मिनिस्टर्स हु होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज.
और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में तीन मैंने बताया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ओके, अभी मीटिंग्स, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग फ्रीक्वेंटली होती है एंड वेयर एज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रेयरली उनकी मीटिंग होती है सबकी। ओके, ये डिफरेंस हम लोग को याद रखना है, 3 मार्क के लिए आ सकता है पेपर। Let's move ahead. Who are the ministers of state? So, minister of state is a title born born by politicians or officials in certain countries, governed under a parliamentary system. In some countries, a minister of state is a junior minister who is assigned to assist a specific cabinet minister. Okay, so they are the second category of ministers. They may or may not hold an independent charge of any portfolio. The prime minister may or may not consult them. They do not participate in the cabinet meetings, but they may be invited to attend the meetings when matters concerning their departments are being considered. Okay, तो जब भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी बुलाया जाए, बट जब बुलाया जाता है तब मतलब कोई एक पॉइंट जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है या उनसे रिलेटेड होता है वो डिस्कस करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कभी कभी कैबिनेट मीटिंग्स में बुलाया जाए। ओके, क्लियर? लेट्स मूव ऑन। Deputy ministers. So deputy minister is a title borne by politicians or officials in certain countries governed under a parliamentary system. In some countries, a deputy minister is a junior minister who is assigned to assist a specific cabinet minister. Okay, ये भी एक तरह से सेम ही हो गया, but they are the third category of ministers who assist the cabinet ministers and the councils of ministers. They are junior ministers and are placed under senior ministers whom they have to assist. They take no part in the cabinet deliberation. इनका कोई भी काम नहीं होता है कैबिनेट मीटिंग्स में या कैबिनेट डेलिब्रेशंस में। इनका डेप्यूटी मिनिस्टर्स का। The Council of Ministers comprises the Prime Minister and a number of other ministers appointed by the President on the advice of the Prime Minister. ये हम लोगों ने पढ़ लिया। Okay. The Constitution of India does not specify either the number of members of the Council of Ministers or classify the members of the Council into different ranks. However, the Constitution 91st Amendment Act 2003 has put a ceiling on the size of the Council of Ministers at the center and in the states to 15% of the strength of the Lok Sabha and state legislatures. In case of smaller states, the maximum number of ministers allowed is 12. The step, the step was taken to check defections from one party to another and also to curb the government expenditure on account of jumbo-sized ministers. ओके, तो ऐसा क्यों किया गया था 2003 में? ये 91st अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि मतलब मेन रीजन था टू कर्ब द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ द जंबो साइज मिनिस्टर्स। तो अगर मतलब स्टेट्स और सेंट्रल की जो मतलब साइज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो हो गया है 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, और अगर छोटे स्टेट्स हैं तो वहां 12 मेंबर्स होते हैं। इसका रीजन क्या था? क्यों? टू कर्ब द पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। The cabinet is composed of a small but important body of senior leaders of the party who are included in the Council of Ministers. They hold important portfolios and decide major policies of the government. They, being trusted colleagues of Prime Minister, form the nucleus of the administration. In fact, the cabinet is the pivot round which the whole administration revolves. Okay, in presidential systems, such as the United States, members of the cabinet are chosen by the president and may also have to be confirmed by one or both of the houses of the legislature. Powers of Prime Minister. Now, अब हम लोग बढ़ते हैं powers of Prime Minister. Okay, तो Prime Minister के पास किस किस तरह के powers होते हैं? पहला कि प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो उन लोग के बीच का क्या रिलेशन होता है, क्या पावर होते हैं उनके बीच में? तो पहला पॉइंट की ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर वर्क्स और functions as an advisor to the president.
जितने भी पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं वो तभी वो फंक्शन कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको कुछ एडवाइस करे, वो मेन एडवाइजर है ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट। ओके, second point ki it is on the advice of prime minister that the president summons and prorogues the parliament and dissolves the lok sabha। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है दैट द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिसॉल्व द लोकसभा, बट वो तभी डिसॉल्व कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करे डिसॉल्व करने के लिए। ओके, अभी प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and the president can ask the council of ministers to reconsider any matter which has not been considered by the cabinet and on which a decision has been taken by a minister. The president may call for any information regarding the affairs of the union and the prime minister has to furnish such information। Okay, तो अगर प्रेसिडेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द यूनियन या फिर अबाउट द मैटर्स जो कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकता है। ये पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट के बीच में। अभी प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। फर्स्ट पॉइंट, that the prime minister is the head of the cabinet. No provision is made in the constitution for the appointment of different categories of ministers such as ministers of cabinet rank, ministers of state and deputy ministers। Okay, second, the power to allocate portfolios and to reshuffle the council of ministers is vested with prime minister। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो वो अलोकेट कर सकता है वो उसको अलोकेट करना पड़ता है पोर्टफोलियोज, स्पेशल डिफरेंट पोर्टफोलियोज जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा। और अगर वो चाहे तो रीशफल भी कर सकता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओके, थर्ड पावर इज टू सिलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स। सो अगर वो चाहे तो वो कोई मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट को एडवाइस करके चूज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, या फिर अगर चाहे तो वो लेटर मतलब बाद में अगर कभी उसको लगे कि ये इनकेपेबल हैं ये मिनिस्टर्स, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करके वो मिनिस्टर्स को निकाल भी सकता है, डिसमिस कर सकता है। Now, the Prime Minister and the Parliament. He is the leader of the Lok Sabha, as the Prime Minister is the leader of the majority party in the Parliament. He is said to be the leader of the House also. Okay. Now he is the spokesperson of the government. The Prime Minister is the chief spokesperson of all the government in the Parliament. He makes all important announcements on national policies on the floor of the House। Second, he would defender of the government policies. The prime minister defends the government in the parliament. When a policy or a minister comes under attack in the parliament, the prime minister comes to defend the issue involved। Okay, now the last one, prime minister as the leader of the nation. So the prime minister represents the nation. When he speaks, the whole nation is supposed to be speaking through him। Second, during a national crisis like war, even though the opposition parties support the prime minister। Okay, तो अगर कोई नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर होती है तो अपोजिशन पार्टीज भी प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस इंडिया वुड हैव विद अदर कंट्रीज। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स। एंड द लास्ट वन, एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इट इज द proposed prime minister for whom or against whom the people vote। I hope you are clear with the powers of the prime minister। Now we are going to be seeing the collective responsibility। So under article 50 75(3) of the constitution, the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है दैट अंडर द आर्टिकल 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, और यू कैन से द लोकसभा। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं या फिर मेन पॉइंट्स हम लोग चाहे तो, कि ऑल द डिसीजंस टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स आर इक्वली एप्लीकेबल टू all other ministers irrespective of their position and powers। Second, all ministers jointly share the responsibility for the government's policies and performance। And last one, a vote of no confidence against a minister is a vote against the whole ministry। Okay, अभी individual responsibility क्या होती है? So the ministers are responsible to the president। They hold office during the pleasure of the president and may be dismissed by him on prime minister's advice। ये point हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोग को पता है। And the last one, कि even though the minister may have the confidence of the
लेजिस्लेचर। ओके, मतलब ये रिलेटेड है, ये एड ऑन है थर्ड सेकंड पॉइंट में, कि अगर उसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है लेजिस्लेचर का, पर अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है दैट ही इज इनकेपेबल, तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसको निकाल सकता है, वो मिनिस्टर को। ओके, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुए होती है कि मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। So with this, we are done with the chapter Prime Minister and the Councils of Minister. I hope you liked the video and it was helpful for you all. एक शॉर्ट रिविजन करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हम लोगों ने द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड उनके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा, एंड देन हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, हम लोगों ने ये तीनों मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। देन द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर with president, like with accordance with the president as the leader of the cabinet, parliamentary leader, and as the leader of the nation. Then the collective responsibility and the individual responsibility. So with this, we are done with the chapter of prime minister and the councils of minister. अगर कोई भी डाउट रहेगा, so do let me know in the comment section. Do like and share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you.